So, a very good morning and a very warm welcome to everyone who has joined us for another lecture in this humble free initiative Legal Literacy, Vestralex free online community classes on law. Today, we have the honor and privilege of welcoming Shri S.G. Hasnain sir. He's Senior Advocate, Supreme Court of India. He's Ex-Additional Advocate General for Uttar Pradesh, Ex-Additional Advocate General for Uttarakhand. Briefly, I'll introduce Sir before handing over the class to Sir to take us forward and through this wonderful and very unique topic of land acquisition laws in India. Shri Hasnain is a designated senior advocate practicing in the Supreme Court of India. He has studied law from Allahabad University in the year 1979 and started his practice in 1980 at the High Court of Judicature at Allahabad. Sir specializes in constitutional law and has successfully conducted and continues to conduct various high-profile cases at the Honorable Supreme Court. After years of legal practice, he has espoused various pressing constitutional causes and has represented many prominent Indian personalities in various cases. Has served as the Additional Advocate General for the state of Uttarakhand from 2000 to 2004 and has as the Additional Advocate General for the state of Uttar Pradesh from 2009 to 2012. He is an avid supporter of sports and was part of his university hockey team while in college. So, I take this opportunity of welcoming you on behalf of our entire team and all the participants and request you to kindly take the class forward. Sir, I also please request Aure ki, sir, since the topic is on land reforms and हम इंडिया में हैं हिंदुस्तान में तो थोड़ा सर हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसे आपको ठीक है उस हिसाब से सर आई रिक्वेस्ट यू टू आई वार्मली वेलकम यू एंड आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक अस थ्रू दिस टॉपिक. Thank you very much for inviting me on this particular topic, old act and new act, of land acquisition. So everybody is good morning and have a pleasure to be here with you. Whatever difference between two acts, Act 1894, Land Acquisition Act, and 13 Act. Now, 1894 Act, which is now being substituted by the Act of 1930, that is known right of fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2030. Prior to this, there was an Act 1894. 1894 for public purpose whenever government is needed for acquisition or for any authority, then notifications are issued under section 4. If urgency is needed, then along with section 17(4), subclass 4, notifications are issued for public purpose, that the land is needed. If dispensing an inquiry under section 5A, then thereafter notification for declaration under section 6 is issued along with section 17(1). Then urgency is dispensed and opportunity was not needed for making their claim by the landowner. And a drastic amendment were made in the year 1984 by Amendment 68 of 1984, which was implemented with the effect from September. Although in the month of April, Parliament amendment were introduced, and finally, with effect from September 94. Drastic amendment in respect of solution. Earlier solution was 15%, but increased 30%.
thereafter interest was also increased from 9% 1 year, thereafter 15 years thereafter till the payment. तो एक तरीके से आप ये समझिए कि 1984 के अमेंडमेंट से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए। एक तो प्रोविजन ऐड किया गया, सोल्यूशन इंक्रीज कर दिया गया 30% इंस्टेड ऑफ 15%। दूसरे जो इंटरेस्ट था उसको इंक्रीज कर दिया 9% 1 year, thereafter 15% till the payment are made. Apart from this, 23(1)(a) was also added. 12% additional market value. 12% additional market value was also required to be paid to the landowner. So 23(1)(a) also added. एडिशनल मार्केट वैल्यू 12% देने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस 28A was added. 28A for redetermination of compensation. Redetermination of compensation in respect of those person who has not filed any reference or application for enhancement of compensation. Compensation enhancement के लिए उन्होंने कोई, अब जिन लोगों ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, अगर उस सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन में कोई एनहांसमेंट हुआ है तो एनहांसमेंट हुआ है तो सेक्शन 4 में अगर उनकी भी लैंड है जिसमें एनहांसमेंट हुआ, within 90 days they can move an application. They can move an application for enhancement of compensation before the competent court. Then it is redetermined before the collector. Redetermination is before the collector. Then you can move against that order reference to the court of session also. तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए कहते लैंड ओनर को, वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंजेस के। Apart from this, 11A was also added. What happened कि बहुत से एक्विजिशन हो गई, 4-6 अवार्ड नहीं किया जा रहा है। देन कहते विदिन 2 years अगर आप अवार्ड नहीं देंगे तो एक्विजिशन प्रोसीडिंग विल लैप्स। तो ये बहुत बड़े कहते मेजर हुआ जिससे किसानों को बहुत बेनिफिट्स हुए। लेकिन 13 में कहते जो एक्ट पास किया उसमें रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की भी स्कीम आई, क्योंकि जो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे उनके लिए भी कहते उस वक्त की पार्लियामेंट ने या उस वक्त की गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको रिहेबिलिटेट और रिसेटल कैसे किया। उसके लिए वेरियस प्रोसेस के कहते अडॉप्ट किए गए। फर्स्ट तो अपार्ट फ्रॉम, और फिर सेक्शन 11 में नाउ एक्ट, अब हम एक्ट 13 ये फेयर राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013 के बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें सेक्शन 11 में इफ लैंड इज नीडेड फॉर पब्लिक पर्पस देन notifications are issued in widely circulated to newspaper and various other mode where they are told. तो नोटिफिकेशन इशू होगा। उसके बाद क्या कहते हैं सेक्शन 19 में फाइनल डिक्लेरेशन, सेक्शन 19 में डिक्लेरेशन जो कि डिक्लेयर्ड फॉर पब्लिक पर्पस। तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त एक्ट था और इसमें लैंड ओनर का बहुत ख्याल किया गया। उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, अगर लैंड एक्वायर हो गई है तो उनको मैक्सिमम कंपनसेशन मिले, जिसके लिए एग्रीकल्चरल लैंड जो थी रूरल एरिया में उसके लिए 4 टाइम
4 टाइम कंपनसेशन देने की बात कही गई एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनेशन। और जो अर्बन एरिया में थे 2 टाइम्स। लेकिन सेक्शन 20 में 24 में एक बड़ी भारी कंट्रोवर्सी आई, और कंट्रोवर्सी इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ द जजमेंट। देन मैटर वाज रिफर्ड to the constitution bench in respect of if the land is acquired and possession is not taken or compensation is not paid, then acquisition is required to be lapsed. ये स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर सेक्शन 20 में 24 में था। लेकिन सिंस मैटर रिफर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन इंदौर केस, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस, और उसमें साफ साफ था, इफ कंपनसेशन इज नॉट पेड और पोजीशन इज नॉट टेकन इन 2 कंटिजेंसी, both either compensation is not paid or possession is not taken, एक्विजिशन लैप्स कर जानी थी। लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से उन्होंने और को एंड कर दोनों सिचुएशन में। पहले एक भी सिचुएशन अगर अराइज करती है कि कंपनसेशन नहीं पे किया तो लैप्स कर जाएगी, और दूसरे में और पोजीशन नहीं लिया तो भी लैप्स कर जाएगी। लेकिन बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देन अब ये कह दिया कि दोनों जब तक कंपनसेशन भी नहीं पे है और कंपनसेशन नहीं पे, पोजीशन भी नहीं लिया गया है, तो लैप्स करेगी। अगर उसमें एक भी कहते कंपनसेशन पेमेंट हो चुका है, पोजीशन नहीं लिया है, तो कंपनसेशन तो लैप्स नहीं करेगी, और पोजीशन ले लिया है, कंपनसेशन नहीं पे किया तो भी लैप्स नहीं करेगी। तो एक तरीके से ये जजमेंट अपने आप में मैं समझता हूं, whatever government desire before the Supreme Court, before the Constitution bench, instead of interpretation of the law, they have legislated the law, which is improper, not acceptable our legal arena. और लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लैंड ऑफ लॉ है, तो वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान ये है कि पोजीशन ले लिया है और कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो ओनली उस जजमेंट में कहा गया कि हम इंटरेस्ट के लिए इंटाइटल है। तो आज के कहते पोजीशन तो ले लिया, आप एवार्ड नहीं कर रहे हैं, कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो आदमी आज जिसकी लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है, पोजीशन लिया जा चुका है, अगर 10 साल 8 साल या 5 साल से ज्यादा वो कंपनसेशन नहीं दे रहा है, तो उनका ना तो रिहेबिलिटेशन होगा, ना रीसेटलमेंट होगा, ना तो उस पैसे से वो अपना कोई कारोबार या जमीन खरीद पाएंगे। इसलिए पहले जो एक्ट आया था उसके हिसाब से पोजीशन, आइदर पोजीशन और कंपनसेशन, दोनों में एक चीज अगर कहते नहीं फुलफिल की जाएगी तो लैप्स कर जाएगी। तो इस तरीके से दिस जजमेंट रिक्वायर्ड reconsideration as I understand, because law is very clear, there is no ambiguity, there is no requirement for interpretation of the law. Under section 24A, entire controversy is roaming around 24. Now by way of interpretation, landowner are deprived their valuable right accrued to them on account of acquisition.
ये मेरा कहना है, और इन एनी वे एनीथिंग अदर माय कलीग स्टूडेंट want to know from me or other, then क्या कहते हैं, I can say in any way I appreciate 84 amendment. Now I appreciate Act 2013, which is completely in favor of land owner. But now by interpretation of this law, now landowner, poor farmer are deprived their valuable right, which is not acceptable. And this judgment requires to reconsider by some larger bench in future. Hello? Yes, sir. So you're audible and absolutely clear. Yes. Thank you. Mr. Farman is here. Nice to see Mr. Farman Naqvi, senior and eminent advocate. Very warm welcome. Very well. So we'll take questions towards the end. If also, howsoever you think best. Yes, anybody can put a question to me. I will answer. Whatever my knowledge is concerned, every day law is changed by some judgment. Law made by parliament sometimes change. But law made by our court, either Supreme Court or High Court, every day change. So, so I'll say, considering that you very gracefully and graciously permitted us to ask questions in the meanwhile. So first of all, I'll request everyone to kindly share whatever questions are there in the chat box. And also you can ask directly. So in the meanwhile, I'll very humbly just request you to kindly take us through the evolution of the framework governing Land Acquisition Act in India. What you have put the question? So what is the framework? So first of all, अगर सर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चलें, सर लैंड एक्विजिशन की जो लॉ है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ से कहाँ पर होती है, उसका मतलब क्या है? क्या किसी के भी घर को अक्वायर किया जा सकता है? कोई किसी फ्लैट में रह रहा है, कोई किसी अपार्टमेंट में रह रहा है, क्या उसको अक्वायर किया जा सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक एम्बिट है लैंड एक्विजिशन एक्ट का? दरअसल क्या है कि फॉर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी and for road, for transportation system, and for railways, for various acquisition is required. As you know, Gurgaon, on account of various developmental activities, including industrial development, as well as residential accommodation required for their employees, land were needed for public purpose. That is, as in Noida, Greater Noida, large scale development has already been taken. But there was, I think, in real sense, farmers were suffering because land was acquired and award was determined. Compensation was paid very meager, बहुत थोड़ा. Then award 1-2 साल में, उसके बाद 4, 5, 6 साल, 8 साल में reference district court, thereafter high court. Reference court हमेशा 84 Act, 1894 Act में हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज अवार्ड को कंपनसेशन इंक्रीज करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता था. ऑल्दो देयर वाज एनफ एविडेंस फॉर इंक्रीज, लेकिन एक ये फीलिंग होती थी कहीं मेरे ऊपर कोई लांछन न लग जाए, और उनको हाई कोर्ट जज बनने की भी पोजीशन होती थी, सीनियर जजेस के यहाँ रहता था. तो उससे क्या वो एवॉइड करते थे, थोड़ा बहुत तो करते थे, लेकिन जो एज पर द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होती थी
मार्केट वैल्यू के लिए, वो कहते देना पूरी तरीके से नहीं दे पाते थे। हाई कोर्ट में फिर इशू नोटिस, प्लीडिंग कंप्लीट, 10-20 ईयर्स के कहते 8 साल से कम किसी को होते। तो आज जो बेदखल हुआ है बेरो, और उसकी लैंड ही कहते उसके खाने पीने का साधन होता है, खेती का, तो पूरी पूरी कई जनरेशन कहते 2-3 जनरेशन बेकार हो जाती है। तो लैंड एक्विजिशन का सिस्टम कहते कोई हमारे कंट्री में आज भी कहते ऐसा नहीं है। लॉ से तो बहुत प्रोटेक्ट, विद इन 2 ईयर्स अवार्ड, जैसे पहले 2 ईयर्स अगर 11A में आप अवार्ड नहीं देंगे तो लैप्स कर जाएगी। आज के उसको घटा के 1 ईयर कर दिया गया है कि लैप्स कर जाएगी। अवार्ड दे दिया, अमाउंट नहीं पे किया नेट के हिसाब से, या थोड़ा जमा कर दिया, अब उन्होंने अथॉरिटी क्रिएट कर दिया। अब सेक्शन 51 में अथॉरिटी क्रिएट कर दिया। अथॉरिटी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट जज आर इक्वल के कहते हैं, या कोई एडवोकेट भी 7 के कहते हैं। तो क्वेश्चन, एक डिस्ट्रिक्ट जज तो बहुत जिम्मेदार होता है, एडीजे जो भी बहुत जिम्मेदार है, और अपॉइंटमेंट थ्रू के कहते हैं प्लेजर जो भी अपॉइंटमेंट होंगे ऑन दिस पोस्ट, जिसको सरकार चाहेगी अथॉरिटी के तौर पे अपॉइंट कर देगी अंडर सेक्शन 51, और उनको सारी पावर दे दी जाएगी। तो एक्चुअली कहते मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये जो अथॉरिटी क्रिएट किया है वो सेक्शन 18 में जो डिस्ट्रिक्ट जज को रेफरेंस की तरह था उसी तरीके से होना चाहिए। ये अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अगर कहते मेरी बात गवर्नमेंट के लोग सुन रहे हो तो उनको अमेंडमेंट करना चाहिए कि कहते 1 ईयर रिड्यूस कर देने से नहीं, लेकिन आप अपने नॉमिनी को बैठा देंगे। और एक और बड़ा भारी स्कैम है नए एक्ट में, ये कंसेंट वाला हो क्या रहा है, मेरी पर्सनल नॉलेज भी है, जो वेरियस प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी एक्सप्रेस वे बन रही है, तो इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उस एरिया में अपॉइंट कर देते हैं कि किसानों को पकड़ के आके बंद करके, और पेपर तैयार रहता है, दस्तखत करा लेते हैं कि कंसेंट हो गई। तो वैल्यूबल राइट जो फ्यूचर में उनको मिलने वाला है उससे डिप्राइव हो जाता है। तो अथॉरिटी एटलीस्ट के कहते हैं उसको, उस प्रोविजन की जगह सेक्शन 18 ओल्ड एक्ट को रिस्टोर कर रेफरेंस के क्लास। तो आज की तारीख में वैल्यूबल राइट मैं तो सीधे सीधे मानता हूं कि किसानों, अच्छा फिर जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लैंड का बैंक वो कर लेती है। आज मुझे 100 रुपए के हिसाब से दिया और फिर कहते 10 साल बाद 1 लाख के हिसाब से 50,000 से कहते, जैसे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कितनी लैंड पड़ी हुई जिसको एक्वायर कर लिया, या यमुना एक्सप्रेसवे पर है। तो लैंड तो किसान तो बेरोजगार हो गए और पैसे के लिए धक्का खा रहे हैं अदालत और कचहरी और हाई कोर्ट के। तो लैंड एक्विजिशन में मुझे तो मैं समझता हूँ फॉर पब्लिक पर्पस इज नीडेड, नो डाउट, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान कहते डिस्प्लेस पर्संस को हो रहा है, लैंड ओनर को हो रहा है, कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहते हैं, मैं ये इसके लिए कोई ऐसी कहते अथॉरिटी क्रिएट किया जाए डे टू डे, एटलीस्ट अवार्ड 3 मंथ्स में। व्हाट इज जिसकी लैंड जा रही है वो एवरी डे खड़ा रहेगा आपका, क्यों 1 साल के लिए क्या कहते हैं लैप्स के पीरियड 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ। देन हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बननी चाहिए, क्या कहते हैं स्पेशल बेंच, स्पेशल कोर्ट के कहते 1 कोर्ट इज नॉट, एटलीस्ट 5 to 10, जैसे आजकल क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिएट किए गए कि लाइवलीहुड से इनका रिलेशन, जो उनकी जमीन जा रही है उससे रोटी रोजी, वो बेरोजगार तो हो ही रहे हैं लेकिन रोटी रोजी भी छिन रही है। तो इस तरीके की सिस्टम को लाना होगा जिससे कि, और ये जो नया जजमेंट है जस्टिस अरुण मिश्रा का, उस क्राई भी बहुत हुआ कोर्ट के अंदर, इन एनी वे उस पर हम नहीं जाएंगे। नाउ लॉ ऑफ द लैंड है और बाइंडिंग है सभी पर, लेकिन इट रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, अदरवाइज इसका जो मिसयूज होगा वो कहते हैं वो कंपनसेट नहीं किया जा सकता। Thank you so much for enlightening us. I'm sure that a lot of young advocates also want to know more and more, because it's obviously India is a very big land and there's a lot of development happening.
सर इससे मिलता जुलता एक सवाल इसी टॉपिक से मिलता हुआ नमन शर्मा जी का है. नमन जी, डू यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन और शुड आई आस्क फॉर यू? Naman ji, please go ahead. So I think, sir, there is some issue. उनका mic तो unmute है. So I'll only ask for your behalf. Naman ji, if you can, please then interject. So he asks, respected sir, kindly enlighten us. In what circumstances can an owner refuse to hand over possession and ownership of the land? Once land is acquired, declaration is made under section 19 and then land vest in the state. Then possession is taken by the government forcefully. We have no objection because nobody can go in civil court. Civil court is barred to entertain any case in respect of acquisition. So, sir, is there any manner whatsoever in which there is some remedy, legal right, or anything whatsoever in which a person जिनका जमीन acquire करने के लिए land acquisition के notification में आ गया है, that person has a choice of saying no, that मैं नहीं चाहता हूँ या फिर I do not want कि मेरे land को acquire किया जाए. Then only remedy is for filing an objection before the competent authority. If inquiry is dispensed, then even your right is forfeited. If inquiry is not dispensed, then your right to file objection explaining there for public purpose, this land is not needed, and other land better than this is available. They can suggest also, so that public purpose may not be frustrated. Absolutely. So public purpose is the most important criteria. Dominant. Then the right accrued to the landowner. And so development के लिए भी सबसे मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण, but it's a very tricky point. नहीं, I agree for the purpose of industrial development, various development, whatever development may be. But question is now development authority used to retain land bank. That is bad. They used to acquire today. Land is not used for 20 years. Land is still vacant. Then, is it fair acquisition? I say this is not fair acquisition. If then you have to utilize the particular period, 5 years or 5 or to 7 years. If land is not required, utilized for public purpose, then it should be reverted back to the landowner, and landowner should return the compensation amount with reasonable interest, whatever under the law. Absolutely, so returning amount to कौन करना चाहता है? In any way, in an opportunity should be given to them. Why not? Because land value will increase 5 to 10 times than the amount paid to them. Absolutely, sir. Absolutely. Land value will, आसपास के area भी sir सबकी value बढ़ जाती है the moment some land is acquired at some place. Yes. So, sir, this is a very interesting concept of land bank. So, can you explain to us, sir, as law students, what exactly is a land bank? Land bank is supposing that you are required 600 acres for public purpose, and you are acquired 2,000 acres. Why you are acquiring? Whatever needed is only 6,000, and you acquired 2,000. Then this 14,000 acre will be surplus, which will be retained by you. That will be called as a land bank. But as sir, I am. जैसे सर एक नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट देता है अपने जो भी उसके अंदर डिपॉजिट्स होते हैं उसके ऊपर, तो लैंड बैंक डज नॉट गिव एनी इंटरेस्ट और एनीथिंग टू द पर्सन फ्रॉम व्हिच लैंड हैज बीन एक्वायर्ड एंड नॉट यूटिलाइज्ड. No,
No. Now I'm entitled the land once acquired as per the provision of law and determined by the collector as award. Thereafter reference court, then high court in appeal, whatever increase that I am entitled. So far whatever land they retain and not develop, keeping themselves. I'm not the land west in the state and transfer to some authority. Whosoever may be, either Noida Authority, Greater Noida, or Gurgaon Development Authority, Indore Development Authority. Land bank is a scam. I say there must be amendment in the present act that if land is not utilized for 5 years, then revert back to the landowner and get back to your compensation. Absolutely, sir. Absolutely. So, sir, developing more on this topic, so there is a question from Kashyap Law Offices, Mr. Nitin Kashyap. Nitinji, do you want to ask your question? So I request everyone ki see the best thing about yes, I just want to ask. Yes, I also want to ask. Sir, I just want to know about which ministry is responsible for acquisition of land. In Ministry of Finance, Ministry of in various states. In various states, as per the allocation of department. As per the allocation of the department. In the state of UP, Shahri Vikas, the Industrial Development Ministry, which ministry is allocated that particular acquisition. Ultimately, state government is required to issue notification under section for public purposes. The land is needed. State in some cases, central government. Sir, what do you say about Ministry of Rural Development is also responsible for acquisition of land? I don't think the rural development acquiring the land. Shahri Vikas Mantri. Shahri, wherever normally Industrial Development Ministry, Shahri Vikas Mantri. Yes, okay. Thank you. Ultimately, state government, central government. Department is not material. Under the Land Acquisition Act, clear cut word is used state government or authority. For authority, state government can acquire land for public purpose, for development, or whatever may be, or for authority, whatever may be. Ultimately, after acquisition, transfer the land to the authority. Thank you very much, sir. Sir, good day. Sir, this is Geeta Shetty. I would like to know that is there any time limit that during that time limit they should complete their work, otherwise the land should be given back? Land should be given back because it is taken, it is acquired for the public purpose, right? For the public purposes, benefit, yeah, whatever they roads or bridges or something they want to build there, gardens, parks, whatever. So what I mean to say, there should be some project that they are going to complete this project within 2 years or 3 years time. And if those land is not used, first of all, though, now as you said, 600 acres are required and they have acquired 2,000 acres. So what about those 1,400 acres land? So what I mean to say, there should be some time limit. By this much time, if it is not done, then land will be given back to the people, because as they are not getting compensation also on time. There is no such provision to return back. They use that land as creating land bank. Like they are, I say land bank. In any way, under the new act,
under new act, there was a clear-cut provision. If compensation is not paid or possession is not taken, then acquisition will lapse. Now, by interpretation in by Constitution bench in Indore case, now interpretation by way of interpretation, if compensation is not paid, and land possession is not taken, then lapse. Sir, what is the limit for Otherwise, getting compensation? if possession is taken and compensation is not paid, then I am entitled only interest. It will not lapse. Although law is 24, very clear if you read, then in any one contingency, till compensation is not paid, then lapse. Possession is not taken, then lapse within the stipulated period as provided under the Act. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, Geeta ma'am. So there is a question from Mr. Pranya Sahu. Mr. Sahu, would you want to ask your question? Good morning, sir. This is Pranay Sahu, advocate from Odisha High Court. I have a question for you, sir. There's a case where land acquisition has been initiated under the National Highway Act of 1986. It has been initiated under Section 3A. Subsequently, by the central government, it's been over 30 years. The central government is taking possession of the land, nor is it paying compensation. After a gap of 13 years, before a few days, NH has written to the landowner that the scope of the land, because of which it was acquired, was widening of the road, and because of some issues, those widening process has been de-scoped. So they do not need the land anymore. But what has happened is they had verbally intimated the landowner that there is no provision under the NH Act to return back the land. Since it has already been decided by the Ministry of Highways that there will be no widening of the road, now the landowner is in a fix as to how he will get his land returned, as neither he is getting compensation nor they are taking the possession, sir. Do we have any? Then since there is, I think, under National 30 Act, there is no such provision to return back. If the land is not utilized, then only remedy is available to you. File a writ petition to get the compensation. Yes, so that is the only remedy that we have, sir. In no case, land. Because Even in the 2013 of the latest Supreme Court case, the compensation, though in National Highway Act, was not at par with the 2013 Act, but placing it in a similar situation to that of a 2013 Act land owner. So then they are supposed to be given compensation under the 2000 Act. Mr. Fazal Advocate will suggest you, very good because morning. he is dealing various cases on this topic. There was a problem. The NHI Act was itself an act wherein the acquisition are done in an emergency situation where the objections and other things are dispensed with, and the land directly vests in the government itself. The national. Yes, sir. Once 3D notification is done, once 3D notification is done, sir, the land directly vests with the central government. Just a minute. Right. Just. Once a notification is done, 3D notification, it vests in the state, or we can say the National Highway Authority of India. Yes. Then determination of amount payable as compensation has been in 3G. 3G. The reference has to be made to the arbitrator. See, right. The problem was that there was no provision which deals with the situation that the landowners will be
placed at a similar situation to the landowners whose land is acquired under 2013 Act. Then the latest 2019 and 2020 and 2022 judgment, there are few judgments wherein of Honorable Justice Rohinton Nariman, wherein they say it is an acquisition of an emergency situation. So there shall be no apprehension to the landowner that they are not being provided compensation as similar to the owners whose land have been acquired in 2010. So they say, the judgment say, you have to give compensation to them as determined under the 2013 Act as the schedule provided in the 2013. They are similarly placed at 2013. Schedule is also there. Though the compensation determination is not at par as in the case of 2013. So they have been the Supreme Court has read down the law and they have said that, and by further notifications also of 2015 and onward notifications, and the NHI says that as per the schedule given in the 2013 Act, they will be provided compensation with the benefit of 2013. Right, sir. So far as this situation is concerned, you can approach the High Court in that very case. My lord, if the landowner is comfortable with the land itself, or he's in a better position of getting compensation, then you can approach the High Court in 226 and say these are the problem right now. The land was once vested into 10 years back. Now how can it be 13 years back? How can it be again vested to the landowner without there being any damages and compensation? So either if the compensation is good, he can keep away with the argue for the compensation, or he can ask for the land itself. Land. Right. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir. Thank you so much, Pranay ji. Thank you so much, sir. So, sir, there is another question from Mr. Dharmendra Dev Pandey. Yes. Dharmendra sir, do you want to ask your question yourself? Dharmendra sir? Okay, so in the meanwhile, while Dharmendra ji comes with this question, so what are the environmental considerations that need to be kept in mind by the government while acquiring any kind of land? 2006 notification. 2006 notification. Definitely will provide that for certain projects they have to take. There's a notification of the Government of India of 2006, which applies to mining also. Mining for the various infrastructure projects given in the schedule in that very government order. If at any point of time there is some requirement of environmental clearance for a particular project proponent for which the acquisition is being done, as such there is no requirement for the acquisition, but for the purpose of the acquisition, which is like be that as it may, for some industrial purpose which have a pollution effect or something like that, then they have to take a sometimes acquisitions are being done by the government itself for various mining projects also. Then they have to take a clearance from the environmental. The SIA, State Impact Assessment Authorities at the state level, and there's a central empowerment authority also regarding that. Then you have to apply, and there is some time schedule where you will be getting the environmental clearance for that particular project. And 6 is now amended by amended provision of 2009. 6 is amended. So 6 is amended. So thank you, sir. Thank you for answering that question. So also, sir, coming back to considering that there is so much evolution in this law, sir, आपके हिसाब से key highlights जो differentiate करती हैं पिछले कानून को नए कानून से, कोई भी 3 मेजर जो हाइलाइट्स जो आपको लगती हैं which differentiate जो पिछला लॉ था और जो अभी करंट जो लॉ है, नया लॉ जो है? एक तो सेक्शन 48 के विपरीत सेक्शन 48 टू
था denotify the acquisition, denotify the acquisition. If क्या कहते sometime land is not utilized, then applications are moved for denotification before the state government. After considering there in some cases where a government feel comfortable, then क्या कहते they denotify the land. All right, sir. Thank you. Thank you so much. So Dharmendra ji is back. Dharmendra ji, you want to ask your question? Yeah, I'm audible. Please. Yes, yes. Hello. Sir, good morning. एक्चुअली मैं सर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, और बेसिकली मैं इलाहाबाद से हूँ, और मेरी जो स्कूलिंग अभी इलाहाबाद से हुई है। और सर इस टाइम जो सब्जेक्ट्स हैं उसको लॉ पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया है, एक अच्छा मतलब ये है कि मैं लिटिगेशन में अच्छा कर सकता हूँ। बट जैसे इलाहाबाद में हाई कोर्ट में देखते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखते हैं, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वहाँ पे, तो ये लगता है कि वहाँ न जाके पहले जुडिशरी पे अप्रोच करना चाहिए। तो इस पे आपका क्या व्यू है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं या 3 इयर्स कोर्स? सर 3 ईयर। 3 इयर्स, कोई बात नहीं है। देखिए कहते इधर बहुत वैकेंसी निकल रही है वेरियस स्टेट्स में, इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ यूपी में, एंड और आपके बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़, ये नॉल के कहते इफ यू आर के कहते अगर आप जुडिशरी के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए ट्राई करते हैं, तो माय गुड विशेस विद यू, it will be better, because our profession is now too much crowded on account of shortage, and no employment is available to qualified person. Then after coming completing law, in addition to other qualification, they used to come to the legal profession. Although still scope, no problem, you can come in the profession. Ultimately, you have to face the situation, and you will be a successful lawyer in this case, and various opportunities here. If you want to go in judicial services, then you try, no problem. Ultimately, you will get some knowledge in that particular field, and you will be selected, all right. If not selected, even though you come in the profession, that's no problem. ये सर बाय गॉड ग्रेस सर दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले, जो मतलब जिन्होंने जो लॉस हैं उनको बहुत डिटेल में और डीप में पढ़ाया, और सर उसको पढ़ने के बाद सारे प्रोविजंस के अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक इनर कॉन्फिडेंस आया कि जब हम हाई कोर्ट में या कहीं भी जाएंगे तो एक एज अ लॉयर अच्छा आर्गूमेंट्स दे पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो लेकिन वही है कि सर जो सोसाइटी की जो डिमांड है, जो एक प्रैक्टिकल में और एक जो थ्योरेटिकल में जो डिफरेंस है, उसको जब देखते हैं तो सर कहीं ना कहीं उसमें एक आगे फॉरवर्ड स्टेप रखने में डर लगता है। ये लगता है कि क्योंकि कैरियर भी देखना है, और क्योंकि कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, और ये लगता है कि ऐसे भीड़ में भाग रहे हैं वो सही है या नहीं। बट देखिए कभी कहते पीछे मुड़ के मत देखिए, जब आगे जाना है तो आगे निगाह रखिए। वो आप देखते हैं घोड़ा जो टांगे या इक्के में रहता है, उसके 2 पट्टे ऐसे होते हैं, न राइट देख सकता है न लेफ्ट देख सकता है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना रहता है। तो वकालत इसी का नाम है, और वकालत को कभी इनिशियल स्टेज में पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए, और पैसे की भूख बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गुजारे के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो बहुत लिटिल मनी भी मिले तो वो अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ के आएंगे वो मटेरियल नहीं है। व्हाट यू परफॉर्म इनसाइड द कोर्ट दैट विल बी रिलेवेंट। और एक बात आप जान लीजिए, वकालत में आने के लिए 5 चीज नोट कर लीजिए लाइफ में, वो बिल्कुल नोट कर लीजिए। और 5 चीज अगर आप करिएगा अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ में, यू विल बी सक्सेसफुल लॉयर। एंड कहते बहुत अच्छी तरीके नोट कीजिए। पहले दूरदृष्टि,
पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन। इस प्रोफेशन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए जो आज लैक कर रही है हम वकीलों में। वक्ती तौर पे तो आप कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन कहते वो कुछ दिन बाद आप प्रोफेशन से गायब हो। ईमानदार, ये सोचिए कि इतने ईमानदार रहिए कि उसका किसी को थोड़ा भी एहसास क्लाइंट को नहीं होना चाहिए कि हाँ इन्होंने मुझसे गलत पैसा लिया या मेरा काम ठीक से नहीं। ये पांचों चीज अगर आप अपने पास रहे, और एक बात जान लीजिए, जिस वक्त आप काला कोट पहनेंगे तो दो चीज और ऐड हो जाती है उसी दिन वकील निर्भीक और निडर हो जाता। जिस लड़के के मुंह से आवाज नहीं निकलती है अपनी फैमिली में, बाहर दोस्तों में, जिस वक्त वो काला कोट पहनता, बैंड लगाता, उसी वक्त निर्भीक निडर हो जाता। यस सर, थैंक यू सो सर मच सर। ये तो सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो धर्मेंद्र जी बिल्कुल शॉर्ट में, बिकॉज बाकी लोगों का भी बार पूछना चाहेंगे। ओके सर। सर जैसे मतलब प्रैक्टिस के लिए सर अभी से हाई कोर्ट में जाना सही है या आफ्टर कंप्लीट LLB नहीं, कंप्लीट? पहले आप एटलीस्ट 1 ईयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए। ओके, बेसिक चीज की नॉलेज होगी। जब हाई कोर्ट में आपके पास मोटी सी फाइल आएगी तो उसको समझने में ये पेपर क्या है, ये पेपर, आप मोटी सी 100 पेज 200 पेज की फाइल को 5 मिनट में कहते उसी में सर्च कर लेंगे कौन सा पेपर। 1 साल 8 महीना जरूर किसी अच्छे वकील जिसके पास काम बहुत, ओके, उसको फॉलो कीजिए, उसके यहाँ जाइए और क्या कहते हैं किसी कोर्ट में भेजिए, क्योंकि काउंसिल आर नोन बाय देयर परफॉर्मेंस इनसाइड द कोर्ट। बड़ी लाइब्रेरी, बड़ी गाड़ी से आना कोई माने नहीं। व्हाट यू परफॉर्म इनसाइड द कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज योर प्रोफेशनल ड्यूटी, दैट इज, वही सबसे मजबूत चीज। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली। और धर्मेंद्र जी, ये इसकी ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, एक बार इसको फिर से वो जो 5 पॉइंट सर ने बताए थे याद कर लेने हैं वो। यस, मैंने उसके नोट बाद किया है, उनको मैं ही डायरी आगे में नोट बढ़ाना है। यस सर, डायरी में नोट करते जा रहा हूँ। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन। यस सर, जी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मैं सर भी आ रहा हूँ। वेरी हम्बली। देखिए ये हाँ, अच्छी धर्मेंद्र बात है कि बात ये हमसे। इलाहाबाद के हैं और मैं भी इलाहाबाद से ही मेरा ताल्लुक है। यही यूनिवर्सिटी से मैंने किया है लॉ यस सर, और मैंने यही देखा। प्रैक्टिस करता रहा मैं क्योंकि, लेकिन 2004 में सीनियर डिजिग्नेट होने के बाद दिल्ली चला। यस सर, तभी मैंने आपका ये अब वो सर एकेडमिक एक था, तभी मैंने धर्मेंद्र इलाहाबाद कहा। अब सुनो थैंक यू सर। सुनो धर्मेंद्र जी, अब ये वाली बात करेंगे कंटिन्यू बाद में, ठीक है, अगली क्लास के अंदर। अब सर देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस व्हिच आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेड लाइट कि थोड़ा सा सर और भी कुछ सवाल हैं। एक सर सैयद इम्तियाज अली सर का एक सवाल है। इम्तियाज सर, आप पूछना चाहेंगे सवाल अपना? इम्तियाज सर? Sir, I will ask on his behalf due to paucity of time. So please, in the meanwhile, if you can, please do join. Sir, he says, sir, Indore Development Authority judgment requires reconsideration by larger bench. What is your thought on this? I have already spoken to you. I have already spoken to you on this question. It requires reconsideration because section 24 is very clear. If compensation is not paid or possession is not taken in this contingency, land acquisition lapse. But now in place of R and is added,
Therefore, meaning is changed. So now Constitution Bench has exercised legislative function. Instead of interpretation of law, they have legislated the law, which is not permissible. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So thank you for reiterating. Sir, Anirudh Kaushik ji has a question. Anirudh ji, do you want to take up your question? Yes, sir. Very good afternoon, sir. My question is that in Land Acquisition Act 2013, there is a provision that the final authority is in hand of collector to determine compensation value. So how do you think that there was controversy regarding that and there was some decision by courts regarding, what do you think about the provision? Since in earlier also for determination of compensation under section 11 of the act was collector. Here also if collector or authority is there, then I think authority is there. Just a minute. Section 11, section for determination of compensation is collector. Yes. Then the collector can determine the compensation, no problem. But you have a remedy. There is one problem. You are right. Earlier, collector determined the compensation, then in reference determined by enhanced or determined by the under section 18 by the district judge, by civil court. But now if you are aggrieved against an award and compensation, then it can be determined by an authority under section 51 of that. Authority will be nominated by the government, appointed by the. Then I already suggested some amendment is required to be made to refer back to as in 1894 Act in section 18 reference to the district judge. So, sir, this is discrimination. If anyone don't want to sell his property to government, so government may use it as a weapon against that person to minimize the compensation, to give very low values, and so he will also live in a fear that it's only final authority in the hand of government, like collector, and after that there is a committee appointed by government. So all that's all are government persons. So this is a discrimination against that person, and because he has no. You are right. I agree. Now now rule of law, rule by law. Rule of law, rule by law. Nowadays, rule by law is prevailing, which is unfortunate. Whatever law made by Parliament is a rule of law. Is something needed as per my desire, I will amend the law or make a law and exercise our power, as you said. That is why I say section 18. If you are aggrieved against the compensation, then you can move an application for reference under section 18 as per old act. Similar provision is required to be here also, instead of authority as provided under section 51 of the act. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, thank you so much. So for your kind guidance, for your enlightenment. So we're all students of law, and we hope to continue to be able students of law. And I'm quite sure that anyone who has attended today's class or who will refer to today's class in the future, be it that they are first-time learners of this very unique law and very important for that matter of fact, or be it that they may be experts and they have wide experience such as yourself. I'm hopeful that everyone will have something more to learn. I most certainly have learned a lot about this law today with you, and I
extend deepest gratitude to you on behalf of all of our participants. Sir, thank you so much. Sir, development की बहुत जरूरत है सर. मेरे यहाँ बार-बार लाइट जा रही है. तो if I can just say that हाँ कहीं ना कहीं पे ये जो सारी चीजें हैं इनका बहुत वैल्यू है. और we're just hopeful sir कि जैसे आपने अपना इतना जीवन में आपने इतना मेहनत किया आपने in development of so many laws. You've actively participated in helping so many people get whatever justice they possibly can. I hope that all people who have been with us that they may also learn this from you. और ये जो 5 principles आपने बताया, I hope that they will be very important takeaways for everyone in this class today. So, sir, I thank you on behalf of everyone. Thank you very much for giving me an opportunity to say something about this particular law, and great honor for me to join with you. So it's absolutely a pleasure, and it's our privilege, everyone's. And so we hope to have you soon with us to discuss some other point of law which may benefit everyone. And sir, I deeply extend gratitude to you on behalf of all of our participants, and to all of our participants for joining today, and people who are watching on YouTube or howsoever you get to see. I hope that you will find some merit in the class and probably want to stay with us for more such sessions and more such learnings. And so with that, I seek your permission to kindly end the class today. And thank you very much. So I hope you found merit in speaking with us and addressing all of these questions also. Thank you. Very kind of you. Thank you so much, sir. Thank you. So thank you everyone for participating. If you're watching on YouTube, please like, share, subscribe, and to all the people who are there, group join karo, so you'll get to know more about the updates about all the classes which are there. And we hope to be back with you soon. And please do share your comments to let us know what you felt about the class today, so that we can also share with sir, because obviously it's absolutely free. तो हमारा भी फर्ज बनता है सर को हमारा जो gratitude है वो express करना, and that can only be done individually. And so ये light देखने से ये बार-बार जा रही है ये. So I just want to re-emphasize the importance of development. हम कितना बोलें, हम obviously there is no end to development. There'll always be. Yes. But I hope that these are all lessons. Thank you so much, sir. So kind of you, sir. Thank you so much.